So this is the question number 34 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked out of the given four option which one is the correct output of the given Python code. So this is a very good question. I actually never find so many good questions in Python, but this one is a very good one. It is really helps you to learn some new concept today. Okay, so if I do the line numbering, line number 1, 2, 3, and 4. First of all, we need to understand how particularly X function is executing. तो first of all, at flow of execution कैसे होगा इसका? पहले प्रोग्राम विल गो टू लाइन नंबर 3. जो इंटरप्रेटर होगा वो कहाँ जाएगा आपका? लाइन नंबर 3 पे. लाइन नंबर 3 के बाद क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा. इट विल गो टू लाइन नंबर 1. नाउ व्हेन फंक्शन इज इंटरप्रेटर का जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 1 पे जाएगा तो क्या होगा? num1 की वैल्यू विल मैप टू 20 एंड num2 की वैल्यू मैप टू 30. यानी कि num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 और num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30. Now it will go to after line number 1 it will go to line number 2. In line number 2 what is given? Sum equals to num1 plus num2. तो कोई वेरिएबल है सम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी num1 plus num2 which is 20 plus 30. तो सम की वैल्यू क्या हो गई 50. Now it has been asked what will be the value of print sum. ठीक है, ध्यान दीजिएगा सम आपके दो जगह यूज हो रहा है, लाइन नंबर 2 पे और लाइन नंबर 3 पे. नाउ ध्यान देने की बात यह है कि ये फंक्शन जो है आपका ऐड फंक्शन, इट डज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. वी हैव नॉट यूज एनी रिटर्न स्टेटमेंट हेयर. सिंस इट इज नॉट हैविंग एनी रिटर्न स्टेटमेंट, जो आउटपुट क्या आएगा इसका, तो इट विल रिटर्न नन. इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. इट विल गिवन आउटपुट एज नन. ओके, तो आउटपुट क्या आएगा इसका नन. तो व्हेन यू प्रिंट सम इट विल गिव यू ऑप्शन नंबर डी नन. इट इज नॉट ऑप्शन नंबर ए. बहुत बच्चे क्या करेंगे, गलती कर देंगे. क्यों? क्योंकि दे विल थिंक 20 प्लस 30 इज 50, सो आउटपुट वुड बी 50. नो, फंक्शन नीड्स टू रिटर्न दैट वैल्यू. भले ही कैलकुलेट हो गया आपकी लाइन नंबर 2 में वैल्यू 50 आ रही है, बट इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. सिंस इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, द बाय डिफॉल्ट वैल्यू वुड बी नन. ओके, so in this case option number D is correct. Okay, if you wish you can run this code on IDE. You will find the same thing which is this one. When you run this code on the IDE you will see कि output क्या आ रहा है आपका none. The reason behind this one is कि जो आपका रिटर्न नहीं कर रहा कुछ वैल्यू, that means it is none only. I hope you learned something new today. Generally इतने अच्छे concept based question आते नहीं है, but nevertheless if you feel there is any doubt regarding this question, feel free to ask in the comment box. Okay guys, then that's it for the day. Thank you for your time.